witness spectacular performances of our students by way of two amazing plays. So sit back, relax and enjoy. It's the summer holidays. All kids are enjoying different activities. Divya is looking for her friends to play with. She sees her friends in the music class. She decides to wait outside for her friends. Hello. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैम। आज हम हमारे क्लास में सीखेंगे राग भीमपलासी। राग भीमपलासी बहुत ही सुहावन राग है। इसका प्रयोग सुगम संगीत में और क्लासिकल में तो है ही है, गज़ल में, भजन में और बॉलीवुड में भी संगीतकारों ने उसका बहुत प्रयोग किया है। तो आज हम हमारे क्लास में रिवीजन करेंगे। कल जो आपको जानकारी दी थी राग भीमपलासी के बारे में, उसका कोई आंसर दे सकता है? बोलो रिया। राग भीमपलासी काफी राग से निकलने वाला राग है। और कोई? इस राग में गांधार और निषाद सुर कोमल लगते हैं। इस राग में आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। और कोई? वादी, मध्यम और संवादी षड्ज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इस राग में भक्ति रस प्रधान है। इस राग की जाति ऑर्डर, इस राग की जाति ऑर्डर संपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गैया चराने जाते थे। बच्चों सुनिए, तब अपनी गैयों को शाम को वापस बुलाने के लिए वे अपनी बांसुरी पर राग भीमपलासी बजाते थे। तो आज हम क्लास में करेंगे राग भीमपलासी की प्रस्तुति, एक क्लासिकल रूप में, बॉलीवुड रूप में और इंस्ट्रूमेंटल में। हमारे बच्चे पूरा ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं। स्टार्ट क्लासिकल। पानी
हेलो 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 सिर्फ सुर हो और ताल न हो, लय न हो तो संगीत अधूरा है। तो अब हमारे बच्चे पेश कर रहे हैं अलग अलग ताल, जिसकी माहिती सर आप दीजिए। जय सतगुरु वंदन। नीलेश भाई जी, मैं म्यूज़िक टीचर आपके सामने अभी भीमप्लास राग, जो मीठा राग सब अच्छी तरह से बजाया गाया। अभी आपके सामने जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो ताल त्रिताल। हम तबले की आत्मा जो कहते हैं, अभी जाकिर भाई का 25 को निधन हुआ, हमने श्रद्धांजलि भी दे दी। ये बच्चे हमारे स्कूल में बहुत अच्छे बजाते हैं, लेकिन उनको हम जो गाइड्स करते उसी तरह से वो बजाते। लेकिन मैं नीलेश भाई से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका परफॉर्मेंस जो होता है तो अच्छा होता है, लेकिन इनके जो मार्क्स है अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल के, वो जो उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया हमारे स्कूल में, तो वो भी बढ़ सकते हैं। अभी ये जो स्टूडेंट्स है, मैं करजत से आता हूँ, 14 साल हो गए, 2011 से म्यूज़िक टीचर है, पर लेकिन ये बच्चे अभी स्कूल में जो एग्ज़ाम दे सके तो उनको एडिशनल भी मार्क्स मिल सकते उनके परफॉर्मेंस से। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना ही रिक्वेस्ट से बाद वो परफॉर्मेंस तो करने ही वाले। अभी त्रिताल, त्रिताल में मात्रा कितनी होती है? 16 मात्रा का त्रिताल आपके सामने वो पेश कर रहे हैं। और त्रिताल में धुन जो हमारे कीबोर्ड्स आर्टिस्ट है वो बजाने वाले हैं। उसके बाद त्रिताल में जो धुन बजेंगी और त्रिताल में चक्रधार परन कैसे बजाया जाता है वो पढ़न करके वो बजाने वाले। धन्यवाद। हेलो हेलो चालू है।
performance. Oh, I wish I could also play tabla like you. But it's okay. I'm going to Atharva's house to play. Do you want to come? You carry on. I will be practicing with my friends here only. Okay, bye. Bye. In the meanwhile, at Atharva's house, Atharva is watching TV. Atharva's mother is nagging him to go out and play. Atharv, what are you doing? I am watching TV, mother. The Little Stars dance show. छोटे तमाशे जैसे पानी बतासे हाथों से ना जाने दे, हाले हाले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला क्यों है तू, छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बतासे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, रततता थोड़ी थोड़ी जोरा जोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी चोरी कर ले, भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में भर ले, पर पपारा थोड़ी थोड़ी चोरा चोरी, थोड़ी थोड़ी चोरी चोरी कर ले, भोली भाली प्यारी प्यारी यादें सारी झोली में भर ले, ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला क्यों है तू, छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बतासे हाथों से ना जाने दे, हौले हौले झरोके चल खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे, रततता Athar, go out and play, beta. It's your summer holidays. Great, Mom. This is my favorite show, The Jungle Mania. पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की
He's the naughtiest animal. But you know the monkeys are very intelligent. And they also have 32 teeth. इसमें भूत कोई चढ़ा है, खैर ना जानना। जिद पकड़ के खड़ा है, कम वक्त छोड़ना जानना। Who is this fat animal? He is Phytopotamus. अरे Phytopotamus नहीं, Hippopotamus. He is the third largest mammal in the world. He can hold his breath for 7 minutes. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, पर मैं आजाद हूँ चिड़िया। रख तू अपनी फुलझड़िया, बढ़िया बढ़िया। Who is he? He is lion. Lion is the king of the jungle. मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नाव अगर चले बस लहर चले जब आवे सिंघम। फूलों को खींच के धूल दलीच के रह पड़ जाए। भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए। न किसी से ये कम बड़ा इसमें है दम, धर सिंह ये सिंघम। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नाव अगर चले बस लहर चले जब आवे सिंघम। Now enough of TV, Atharva. See, Divya has come to play. Okay. Hi, Atharva. Hi, Divya. Come on, let's go and play outside. It's so hot today. Let's stay indoors and play video games. Yes, good idea. Let's make it more interesting. How about a multiplayer game? That's great. But for that, we will need some more players. Atharva, let's ask Asta and Rishabh. I am sure they will play with us. Good idea. Let's go. Hey, Divya. See Asta's mom's dance academy. Look, Auntie is outside with her dance students. Let's meet Auntie first. Yes, I can see many of the kids from our school. Yes. Hello, Auntie. How are you? Is Asta home? Hello kids, I am fine. Asta is inside. My students are preparing for their dance concert. Do you want to see their performance? Yes, Auntie, we would love to see. So sit here. Okay kids, 1, 2, 3, start. मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने
आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बाहरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा That was a lovely performance. Thank you, Auntie, for this opportunity. You are most welcome, my dear. Go and meet Asta inside the house. Okay. Hi, Asta. Hi, how are you? Fine. Please have a seat. Want to play a multiplayer game? Not now. I am reading. Reading in summer vacations. It's time for fun. Reading is for school. You both are so wrong. Reading is fun. You can't believe I am reading this book since morning. Reading since morning. I am just watching TV since morning. And I am just finding some friends since morning. What are you reading, Asta? I am reading Malgudi Days. Malgudi sounds like a sweet dish. Sweet dish? No, it's collection of delightful stories, funny, simple and full of lessons. It is written by the legendary writer R.K. Narayan. Let me tell you one of the stories which talks about facing our fears. Sure.
प्यारी नीली गाड़ी हो, मालगुड़ी की गाड़ी हो, प्यारी नीली गाड़ी हो, मालगुड़ी की गाड़ी हो, प्यारी नीली गाड़ी। Swami, did you really sleep well? Where are you going? Cricket practice. There's a test match tomorrow. MCC versus Board High School. Is it? From whom are you playing? How many times I told you? I am a vice captain of MCC, Miss Malgudi Cricket Club, and also opening bowlers. Team players call me Tate. Tay? Yes, he's a great English bowler. So are you not going to school today? After practice, I will go to school. Go after having breakfast. No, today I am late. Swami, the entire day you run, where you will get energy from? Every day you give me badam halwa. From there I get energy. Hey, sit down, have breakfast and then go. No, mother, cricket. Sit down. Swami, chew it slowly. Don't make sound. Listen, what is written in the newspaper? An 8-year-old boy from MP Hills survived an attack by a man-eating tiger. The boy climbed up the nearest tree and coolly threw sticks at it from the safety of the tree. The tiger, however, didn't give up and guarded its prey till the early hours of the morning. Some villagers passing upon that way fell upon the animal and killed it. The courageous 8-year-old boy is now back with his family and is being given a certificate for bravery by the district collector. Have you seen how much they praise him for his bravery? That boy must be tall, wide, and have got lot of strength. He cannot be 8 years old. Ma, how can a such boy fight a tiger? Yes, the newspaper peoples are full and you are very intelligent, foolish boy. The actual things are guts. A man should have guts like tiger. If it is there, then you have everything. Otherwise, there is nothing. How can it happen, Appa? Consider that I am the bravest person in the world. What can I do if a huge tiger attacks me? What can I do? I should have the guts, isn't it? First of all, prove whether you have guts in you or not. I have. What you have? Guts. What's the proof of it? I have got the guts. Okay, fine. If you have guts, can you sleep for the entire night in my office room alone? Yes. In the office room, alone? Yes. Tonight? Yes. So it is decided. You are sleeping there tonight, alone. Why are you still here? Will you not go to school? I will go. Ma, do you know that we are going to include players who are older than us and we will be playing with them too. Father, we are going to buy everything new. Bat, ball, stumps and everything. Captain has told me to get some money from your father. Okay, fine. We will see it later. But did you watch this place carefully? You are going to sleep here tonight, alone. I will sleep, father. I will definitely sleep. Promise, from the first of the next month. No, from tonight. Understand? Did you do the homework? No, I didn't do the homework. What will happen now? Are Swami, what happened? Let's go in class. British people entered India for the first time. The date was 31st December 1600. East India Company too was started here. The Battle of Plassey
by Sir Clive in the year 1757. Swaminathan. Yes, ma'am. Where did the British people enter India for the first time? Malgudi, ma'am. Silence, silence. Stand on the bench, Swaminathan. Watch here carefully. This is the place Calcutta. Did you understand? As homework, you have to revise the lessons 2 times and you too. Understand? Yes. Let's play cricket. Money, we know that. You hit lot of sixes. Are we here to run? Hey, run. Go and bring the ball. Come fast, Swami. Come running. There is a ghost over there. Ghost. Ghost. Let it be. I will play cricket with it too. Swami, this is not a matter of joke. I have seen a ghost in real life. Do you know what happened to Munu Swami's father? What happened? Last night, he was under a huge tree. Don't know what he was doing. In the meantime, a ghost came and slapped him tightly. And blood was coming out of his mouth. Blood. Blood? Oh God. When is it? Last night at 2:30, if I were to find a ghost, I would have to beat him like this. Money, we are getting late. Let's go home. Come, come. Oh God. What happened? My father told me to sleep in the office room from today. That too alone. Alone? What will you do now? I don't understand. Sleep before he comes. Leave the house slowly when he reads the newspaper. Swami, this is the tree where the ghost eats Munu Swami's father. Oh my God. Swami, come inside. We will meet tomorrow. Yes. Is this time to come home? Where did you go? Munu Swami. Munu Swami? Yes, cricket. Cricket? Office. Come inside. But listen to me. You don't support him. He is 9-year-old and he sleeps with you or mother. He is studying in 5th standard. You will spoil him. Why are you telling this all by looking at me? I mean, I am not spoiling him. Your mother is spoiling him. Whatever you want to tell, go and tell to his grandmother, not to me. Swami, why did you sleep early today? Did you not listen my stories today? Did you really sleep well? Should I off the lamp? You don't understand. Now I am sleeping. Don't call me even if the house is set on fire. Let anything happen, but don't call me. I am not sleep immediately. Maybe I will die. Is it? Then sleep. Come, the food is ready. where is Swami? He might have eaten and slept. Might have slept? How it is possible? I told him, Swami, come on Swami, get up. Let him sleep here. Why are you waking him? He's in deep sleep. If I tell something, then there is lot of meaning in it. He has been pampered a lot. You will spoil him. Come. Shrinu, where he will sleep? In the office. Office? Yes. Nowadays, 8-year-old boy are fighting with tiger in the jungle. And here of our house sleeps by hugging his grandmother. Come. Shrinu, why are you forcing him? His guts won't become less if he sleeps in hall. If I told him to sleep in the office, he will sleep in the office. Understand?
let me sleep in the hall. There is so many dust and mud in your room, and so many snakes and scorpions behind your book, isn't it? No, beta, there aren't any snakes and scorpions. If you want, I will open one window. Here it is. Cool breeze will come from here. Here are the bed sheets for today. If you want, you can sleep on this bench itself. Sleep well. Appa, please, little small lamb. Don't get frightened, beta. We are not far away from you. We are at the other side of the passage. Appa, please, keep this door open. On one condition, you will not go to sleep with your dadima. If I watch that you are sleeping with your dadima, then I will tell Mani and friends of yours. Then you know what will happen to you. The entire school will make fun of you. That Swami is a coward, Swami is a coward. Now go and sleep. Appa is very bad. Is this the place to sleep? Why did they write about that tiger and boy in that newspaper? That boy is devil. He fought the tiger and I have to sleep there too alone. It is good if I die before morning. If I die, then father will understand. Maybe one tiger is there. I have to sleep under the bench. Rangarajan, call the police. What happened, beta? Are you fine? But what happened, beta? I don't know anything. I don't know anything. It is a matter of great surprise, Mr. Srinivasan ji. I don't believe that such a small boy caught the famous thief. Been brave and courage. Come, Sir, the thing is that I told him to sleep in my office room alone and the window left open. let it be anything. The courage he has shown is great. We need children like you. We need children like you. What do you say, child? Will you become a police officer? Very good. मी कधी बोलणार हिच्या तोंडाचा वास येतोय. When will you become police officer from tomorrow? How did you hold the thief till your father came, Swami? It wasn't 3 o'clock in the night. 3 and thief come into my home and I push him. He fell down to the other side of the room. And I punch on his nose and I kick him like this. And I twisted his hand and I caught him like this then. Telling about biting the thief. About biting? No, I'm calm. You are brave. I had heard that you are doing a job for police department. I don't know.
I wanted to become an engine driver or bus conductor. Now I have to think. Don't do risky jobs. Study well and become a government officer. Dadima, do you know that they're going to have my photo today? You are come with me? Me? No dear, they cannot take my photo. You go, wear a good clothes and go. Listen, don't go near the camera. I have heard that fire come out of it. We become free and cannot do anything. Even if we are शिव गर्जना के टाइम में फिर से देने का है. of courage. Sit properly. Leave the head, stomach in, chest out. Hold a breath. Smile, beta. Oh, who is it? What are you doing over there? I am Maharaj. Maharaj, why are you standing there? My photo too should come Why? because I also caught the thief. Okay, come here. Now you hold this. Will my photo come? Yes, it will come. It will come behind his photo. Ah, Malgudi. Swami, where is Swami? His photo has come in Malgudi Times. Show it to me. Oh, my Swami's photos are come. Oh, beautiful, wonderful. Oh, how cute he is looking. Watch it, mother. Did my photo come? It didn't come. Where is he? He is sleeping. Slept so early? Poor Yes, boy children cannot of sleep. this age sleeps early. Poor boy cannot sleep a single moment because of you before yesterday. Then what should be done? Should he be allowed to sleep with you forever by sucking his thumb? Dadi Ma, tell me the story. Why are you behind him? Let him sleep whenever he wants. Yes, there is no need to trouble him to sleep here and there. Look, Shrenu, I have got only one grandson. If something should happen to him, Okay, what have I got to do? Both mother and Dadi spoil him. If he becomes good for nothing, lazy, coward after growing up, don't tell me. Swami, today I will tell you a new story about the Harichandra Raja. There was a king. Dadima, Story in such a simple way. It taught us to be brave and to face our fears. Exactly. When we have courage, we become free and can achieve anything. Even if we are from small villages, an attitude of courage builds terrific self-confidence to achieve all our dreams. छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे।
दिन तारों में जीना भी नहीं चांद का टीका माथे लगा के रात दिन तारों में जीना भी नहीं हो हम चले ओए रामचंद्र हम चले ओए रामचंद्र धड़क 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 धुआं उड़ाई दे धड़क 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 सीटी बजाई दे धड़क 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 धुआं उड़ाई दे धड़क 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 मुझे बनाई दे मुझे बुलाए रे मुझे बुलाए रे जोरात बोल. हो का? धड़क 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 धुआं उड़ाए रे धड़क 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 सीटी बजाए रे. Life is stress free when we face our fears. I have finished reading for the day. Now I can play video games. Yes, let's play the battle of superheroes. But we need one more player. Let's go to Rishabh's house. Hi, Hi, Rishabh. Hey friends, you are here? What are you doing? Nothing much. Great, then you can play the battle of superheroes with us. Yes, that sounds fun. This is such a cool battle, guys. You know what, friends? Even more interesting than this battle is the Battle of Pawankin. It was the real battle with real superheroes. Real superheroes? Battle of Pawankin? I am surprised that you are unaware of the Battle of Pawankin. It is the story of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Baji Prabhu Deshpande. It's the story of resilience, fortitude, loyalty and bravery. Sounds interesting. Would love to know about them. Please tell us. Let's watch it. सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठाने है माया भवानी बड़े खुददार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ
पद्मा जगदम्बे है माय भवानी। है माय भवानी। हो धुआं धुआं गहरा था घना था अंधेरा था, तूने उसमें रोशनी भरी है। दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तूने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसों बरसों तरसी थे आई इन होठों पे हंसी। अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी ना राह से हटे, हमने बात यही मन में डाले है माय भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरणों की शपथ मां जगदम्बे है माय भवानी। है माय भवानी। है माय भवानी। कर स्टार्ट सर करो। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज, गणपति, भूपति, प्रजापति, अश्वपति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टावधान जागृत, अष्ट प्रधान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, राजशिव छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, राजमाता जिजाऊ की। राजाला राज आलं जिंकून या जगभरी, शिवबाराचं नाव गाजजी. निघत वारकात गाण भाळा भरी, शिवबाराचं टंक वाजजी. गडानं वाज मराठीचे, गणिन ब्राह्मणी खातोजी. कंचा गडभी करू द्या माझे, आमच्या भाराने ठासली. राज आलं जिंकून या जगभरी, शिवबाराचं नाव गाजजी. फजल खान, तुम्हारी फौज किले के पिछली जगह रहेगी। ये सिवा के लोग कहीं से भी दगा दे सकते हैं, समझे?
मसूद, हुजूर, तुम्हारी एक टुकड़ी किले के चारों ओर घूमती रहेगी। अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो सीधा हमला बोल देना। जी हुजूर। और चौकन्ने रहना, ये मराठा सामने से वार नहीं करेंगे, छिप छिप के वार करना इनकी फितरत में है। आखिर देखते हैं ये शिवा कितने दिन इस किले में छुपेगा। रसद खत्म होने के बाद उसे नीचे आना ही पड़ेगा। हा 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 हा। और चौकन्ने रहना, कहीं पे भी घेरा कमजोर लगा तो दुश्मन के पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, समझे? जी हुजूर। राज, त्या सिद्धीने लईच मजबूत येडा लावलाय. अहो मुंगी सुधी कात बाहेर करू शकत नाही. आणि त्यात भर म्हणून ती टोपीकर माकडं सुधी काढल्यात तोफा घेऊन त्यांच्या सोबतीला. एकीकडून सिद्धी तर दुसरीकडून शाहिस्ते खान. आता आम्ही संपलो असं वाटून हे टोपीकर इंग्रज आमच्या वैऱ्याच्या छावणीत त्यांच्या मदतीला आलेत. व्यापाराचं कारण काढून ह्या देशी आलेली ही मंडळी, पण यांना व्यापारापेक्षा या देशाच्या राजकारणात अधिक रस. यांना वेळेवरच ठेसलं नाही तर येणाऱ्या काळात हे खूपच त्रासदायक ठरणार आहेत. होय राजे, आता यातून मार्ग काढायलाच हवा, कारण लवकरच गडावर येईल, रसद देखील संपेल. होय बाजी, आपण लवकरच हा गड सोडून एखाद्या अंधाऱ्या रात्री जवळ असलेला विशालगड जवळ करूया. विशालगडावर पोचतात आपण पुन्हा नव्या जोमाने सिद्धीवर हल्ला चढू. अगदीच योग्य विचार आहे राज. आपण इथून बाहेर पडलो तर आपणास गनिमांची दोन्ही बाजूनी कोंडी करता येईल. शत्रूची कोंडी करायची असेल तर शत्रूस गाफील ठेवूनच येथून बाहेर पाडावा लागेल. आणि त्यासाठी तुमचा बेत काय आहे नाईक? राज, बेत असा आहे का जेव्हा आपण गड उतरायला लागू तेव्हा आपल्या बरोबर 2 पालख्या राहत्याल. एका पालखीमध्ये तुम्ही असत्याल तर दुसऱ्या पालखीमध्ये शिवा काशीत. पण नाईक शिवा? राज, 2 पालख्या राहत्याल तर आपल्यास दुश्मनास चकवा देता येईल आणि आपल्याला गड उतरायला वेळ सुद्धा मिळेल. पण नाईक, आमच्यासाठी आम्ही शिवाचा जीव धोक्यात घालायचा? तसं नाही राज. म्हणजे वस्तीची पतक हुकली की शिवा पालखी तिथेच सोडेल आणि थेट येऊन आपल्याला भेटेल की काय रे शिवा? वय राज, तुम्ही काय बी काळजी करू नका सा. शिवा, आम्हाला आमच्या प्रत्येक मावळ्याचं प्राण प्रिय आहे. वय राज, नाईक म्हणत्यान तसंच होईन. पतक हुकताच मी तुम्हाला नेऊन भेटतो की. राज, नायकांनी याआधी स्वराज्य संकटात असताना योग्य ते मार्ग सुचवलेत आणि यावेळी त्यांचा बेत चुकणार नाही. होय नाईक, आता तुम्हीच आमचे शंभूशंकर, तुम्हीच मार्ग दाखवा. वय राज, फक्त आजची रात्र द्या. गनिमाचा सुगावा घेतो, मग उद्या रात्रीच गड उतरू की. येतो राज. शिवा, तुम्ही आमच्या सोबत चला. नाही राज, मला जाऊ द्या. शिवा, आम्ही सांगतोय ना तुम्ही आमच्या सोबत चला. माफ करा राज, लहान तोटी मोठा घास घेतो, पण माझं भाग्य किती बघता, माझ्या आई बापाची पुण्याई किती बघता. राज, तुमची ही कापडं जेव्हा माझ्या अंगाला लागली ना तेव्हाच शिवा काशीत मिळाला. जगदंब जगदंब. आता उरलाय तर फक्त तुमचा आत्मा. राज, तुमच्या ध्यानात नाही आलं पण मला स्वर्गाचं दार दिसतं या. अहो अजून काय पाहिजे एका माणसाला? अहो लोक आयुष्यभर माणूस कसा जगला ते सांगतात, पण माझ्या बाबतीत लोक सांगतील की हा शिवा असा बिलंदर की शिवाजी राजाचं मरण मेला, मरुशान बी हजारोवरी जगीन म्या. येतो राज.
शिवा चला आता वेळ नका दौडू. कटर पडलेली शिवा शिवा शिवा, कब हाथ में आएगा ये पहाड़ का चूहा? हुजूर हुजूर, दगा हो गया हुजूर, दगा हो गया. क्या हुआ? शिवा विशाल लड़के और भाग रहे हुजूर. क्या? मसूद, 10,000 की फौज लेके शिवा का पीछा करो. मुझे शिवा चाहिए, जिंदा या मुर्दा. चलो. राजे, विशालगड अजून खूप लांब आहे, वाट सुद्धा अवघड आहे. आपण किती धावलो तरी गणी मात्यात दूर नाही. आम्ही हा लोंढा इथेच या घोडखिंडीत अडवतो. तुम्ही पुढे वा राजे, विशालगड जवळ करा. या राजे या. नाही बाजी, आम्ही तुम्हा सर्वांना इथे मरणाच्या दारात सोडून पुढे जाणार नाही. बाजी बाजी, गनीम उठलाय गनीम. नाही राजे, गनिमांच्या हाती सापडलात तर पूर्ण मराठीशाही वाहून जाईल. नाही बाजी, बाजी काही झालं तरी चालेल, पण आम्ही तुम्हा सर्वांना इथे सोडून पुढे जाणार नाही. नाही, जे होईल ते सर्वांचंच होईल. चला आता गनिमाला सामोरे जाऊ. नाही राजे, वेळ ओळखा राजे, वेळ ओळखा. अवघा मराठा मुलूक तुमच्यावर अवलंबून आहे. मी तुमच्याशी या भाषेत बोलतोय, मला क्षमा करा राजे. असं समजा की मी तुम्हाला वडीलकीच्या नात्याने सांगतोय, पण खरंच तुम्ही पुढे व्हा राजे, पुढे व्हा. राजे, लाख मेले तरी चालतील, पण लाखांचा पोशिंदा जगलाच पाहिजे राजे. लाखांचा पोशिंदा जगलाच पाहिजे. नाही बाजी, आम्ही आमच्या तमाम भावंडांना इथे सोडून पुढे जाणार नाही. काळजी करू नका, आता हीच आमची जागा. कोणाचं नाव कुठे कोरलं जाणार आणि कोणाचं कुठे, पण आमचं नाव इथेच कोरलं जाणार. आता हेच आमचं वैकुंठ आणि हीच आमची पंढरी. जसं विठ्ठलाच्या भक्तांचं नाव त्यांच्या सोबत जोडलं जातं, तसंच तुमच्या बरोबर आमचं नाव जोडलं जाणार आहे. ही संधी आमच्याकडून हिरावून नका घेऊ राजे, हिरावून नका घेऊ. नाही बाजी नाही. राजे, जर आता तुम्ही माझं ऐकलत नाही तर ही तुमची कटार माझ्या काळजात खुपसून रक्ताचा सडा मी तुमच्या पायावर सांडेन. राजे, गणिम जवळ आलाय, वेळ दौडू नका राजे. या राजे या. राजे, विशालगडावर पोहोचल्यानंतर तोफांचे 3 बाल द्या. तोपर्यंत या घोडखिंडीत आम्ही गणिम अडवून ठेवतो. या राजे, आपण या. बाजी, तुम्ही शंभू महादेवाची आण घ्या. आपण पुन्हा भेटणार आहोत बाजी. हर हर महादेव. चला. अकेले खड़े हो, हट जाओ वरना खीमा देंगे. अरे हट, तोफे आधी ना मरे बाजी. हर जलदार. महादेव. बाजी, तुम्हारे जैसा सुरमा पूरी जिंदगी में नहीं देखा. बादशाह साहब के गुलाम बन जाओ, जो चाहिए मिलेगा. अरे तू तुझ्या बादशावर, माझ्या महाराजांसाठी, माझ्या स्वराज्यासाठी 100 वेळा जरी मरण आलं तरी हसत हसत पत्करेला बाजी. बाजी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार कर तुम्हारी सिया को पकड़ लूंगा. तो फेत पर्यंत मी लढणार, मी लढणार. माझे राजे गडावर पोचले. राज, या बाजीचा शेवटचा मुजरा. राज, डोळे मिटून घेतो मी तुझ्या पाशी येतो. डोळे मिटून घेतो मी तुझ्या पाशी येतो.
बाजी रायाजी आणि आमची बांदल सेना तब्बल 12 घटिका या खिंडीत लढले. 40 स्वार अंगावर झेलत हसत हसत स्वराज्याच्या मातीत विलीन झाले. तुमच्या जाण्यानं स्वराज्याचं कधीही न भरून निघणारं नुकसान झालं. पण आज हे स्वराज्य उभं आहे ते तुमच्यासारख्या स्वामीनिष्ठ आणि प्रामाणिक साथीदारांमुळेच. हा केवळ कासरे नदीचा उगम नाही, ही केवळ घोडखिंड नाही, तर ही आहे तुमच्यासारख्या शूरवीराने बलिदान केलेली पावनखिंड. पावनखिंड. जगदंब जगदंब जगदंब. अरे दुश्मन असू दे गनीम असू दे किती बी हुशार, अरे दुश्मन असू दे गनीम असू दे किती बी हुशार. शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार, शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार, हे लागना पार, लागना पार, अरे लागना पार, लागना पार, हे शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार. काही सांगता नाही. अरे मग काय गड्या हो, यो बसला हाय ना गनीम, येढा मांडून आलंय आणि मुघलांनी नजर वाकडी मग राजानं काय केलं? काय केलं महाराज? राजांनी आता युगत मांडली. काय मांडली? अरे युगत मांडली, युगत मांडली, युगत मांडली, युगत मांडली, अरे युगत मांडली, राजानं युगत मांडली, युगत मांडली, युगत मांडली, बघा 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 युगत मांडली. राजांनी आता युगत मांडली, शिवरायांनी युगत मांडली, महाराजांनी युगत मांडली, अशी ही युगत राजांनी मांडली. पंताची जुबान राजांनी काढली, सिद्धीच्या खेम्यात पंत तो जिभेनं शिव बसवत भेटाया येणार सुलूक होणार हो, शिव बसवत भेटाया येणार सुलूक होणार हो, हे शिव बसवत भेटाया येणार सुलूक होणार हो. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हर महादेव, हर महादेव. Indeed, Baji Prabhu Deshpande was a real superhero and will remember for long, long years. Absolutely true, Divya. I am amazed by his bravery. Guys, this was such a well spent holiday. We enjoyed and at the same time we learned a lot. Yes, we learned the importance of facing our fears and having balance between academics and sports. We learned from our real life superheroes about courage, loyalty, problem solving, and how to plan strategically. Indeed. Let's meet tomorrow for more fun and even more learning. Bye. 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 Hello.
Now I request Madhura to propose a vote of thanks. Gratitude is the inward feeling of kindness received. Thankfulness is the natural impulse to express that feeling. I regard it is an honor and privilege to extend a vote of thanks on this momentous occasion. Our deepest gratitude to Param Puja Papaji, because of whom we all are here today. Its sweetest memories and guidance is still with us every day. I believe it's our pleasure to have Pujya Shri Nilesh Bhai with us today. Thank you for your invaluable time and support you have given us. I am thankful to our Honorable CEO, Dr. J.K. Joshi Sir, who has always been the backbone of this institution and who has guided us and been with us through thick and thin. I would like to thank our principal, Professor Vaishali Pandey ma'am, who has always pushed us to do better and brought out the best in our students. I extend my gratitude to our Vice Principal William Sir for his guidance. Mr. Rajan Hemani Sir, I thank you for your support. I would also like to extend my heartfelt thanks to our Rupa ma'am for all the guidance you have given us. I would also like to extend my gratitude to Mr. Naresh Shedge Sir for his outstanding contributions to our drama Pavan Kind. We are grateful to all the parents, mumukshus and guests present here. Your encouragement always helps us to do better. Next, I would also like to thank organizing team, teachers and staff members. I should not forget to thank volunteers and student teams who put their tremendous efforts in this event. I would also like to thank transportation team, our non-teaching staff, housekeeping staff. Without you guys, this event was not possible. Last but not the least, we thank the Ashram Office team and AV team for their support. Events Infra team for Vitrak Vigyat Bhavan arrangements and all our vendors for mandap, light, sound, screen, videography, without whom the program would not have been possible. Thank you all for all your efforts and hard work. Now, I request everyone to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे With this, I declare the end of our annual day program. Thank you very much again.